Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks witnessed losses of more than 1%. Sensex declines to trade near 59,300. Nifty slips below 17,700. And Brent crude prices rise above $84 per barrel level. घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, 1% से अधिक की हुई गिरावट। सेंसेक्स 59,300 के आसपास और निफ्टी 17,700 से नीचे आकर हुए बंद। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 4 पैसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $84 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में कल हुई बड़ी गिरावट के बाद आज भी मुनाफा वसूली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 59,300 के नजदीक आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,700 के स्तर से नीचे फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 678 अंक यानी 1.13% नुकसान के साथ 59,307 पर आकर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 186 अंक यानी 1.04% घाटे के साथ 17,672 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां पर अपेक्षाकृत अलग रुख दिखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.16% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.38% घाटे में रहा। Sensex and Nifty today witnessed losses of more than 1% amid mixed global cues. Sensex declined to trade near 59,300, while Nifty ended below 17,700 level. BSE Sensex tumbled 678 points, 1.13%, to trade at 59,307 points. NSE Nifty also plunged 186 points, 1.04%, to trade at 17,672. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.16% and the small-cap index fell 0.38%. In the Sensex pack, shares of 11 companies gained, while 19 logged losses. Ultratech Cement was the top gainer as it surged 2.6%, followed by Dr. Reddy's Laboratories, which gained 2.1%. Maruti climbed 1.5% and Tata Steel surged 1.3%. On the other hand, Tech Mahindra and NTPC both plunged 3.5%. Kotak Bank declined 3.1% and IndusInd Bank fell 3%. In sectoral indices, 7 out of 19 sectors logged gains. Basic materials sector stocks added 0.6%. Realty gained 0.5% and auto rose 0.4%. Energy plunged 1.9%, IT declined 1.6% and tech fell 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative. The shares of 1,347 companies gained, but 1,902 fell. Shares of 150 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे मजबूत हुआ, ₹74.88 के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.23% बढ़कर 93.56 पर पहुंच गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कल 11:30 के आसपास सेंसेक्स फिसला और आज भी ठीक ठाक गिरावट हुई है 678 अंक की। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को और बाजार में कुल मिलाकर क्या रुख रह रहा है निवेशकों का?
तो मनोज जी, यदि हम इस सप्ताह को देखें, पूरे सप्ताह को, आज आपने कहा कि आज भी बाजार गिरा, कल भी गिरा था, तो और पूरे सप्ताह को देखें तो करीब करीब 2% जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, यानी निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें हमने गिरावट देखी। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पर उतनी गिरावट नहीं थी। पर तो मैं ये कहूंगा कि जो एक ट्रेंड, एक वीकनेस का रहा, जिसमें जो बड़े शेयर्स हैं, जहां पर पर्टिकुलरली एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जहां बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, उन कंपनियों में मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, वहां पर सेलिंग चल रही है और वहां पर गिरावट आ रही है। अभी तक हालांकि एक स्ट्रैटेजी रही है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कि बाय ऑन डिप्स, यानी जब गिरावट आती थी तो हम देखते थे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग से वो शेयर बाजार में वापस उछाल आता था। लेकिन हमने देखा इस सप्ताह की जो सेलिंग है वो बहुत अग्रेसिव है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो काफी बड़े शेयर होल्डर हैं, वो अब सेलिंग कर रहे हैं तो बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, और उसके सामने मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा इस वक्त ताकत नहीं काम कर रही। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग रही है जो एफआईआई की, उसके चलते बाजार में गिरावट है। यदि आप मुझसे पूछेंगे इसका मायने क्या है लंबे असर में, तो मैं कहूंगा कि ये खास तौर से समय है कॉशियस रहने का इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा यहां से बाजार में अभी हाल में कुछ बड़ी तेजी आए, ऐसा नहीं लगता। मार्केट्स डेफिनेटली वीकनेस की तरफ रहेंगी, और मुझे लगता है उसमें अभी कुछ और समय लगेगा बाजारों को कंसोलिडेट करने में, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। What do you have to say about the banking index, which fell by 3.3%? What are the difficulties that the banking sector is facing in terms of valuation? Even though the margins have improved, the net performing assets have come down, especially for PSU banks. What's happening there? So, Arjun, interestingly, when we talk about banking, we need to distinguish between private sector banking and public sector banks. Interestingly, for the last many years, the private sector banks were doing very well in the markets. Those stocks kept going up, and PSU banks were actually underperforming by a very large margin. This situation has now reversed recently, and you will see that even when the banking index, which is largely weighted by private sector banks, that index went down. We saw the PSU banking index was actually up by more than 2% today. So clearly, I think investors who have made good money on private sector banks, they now see value in PSU banks. They are selling or profit booking in private banks and rotating that money into PSU banks. So, and I think that is going to be a long-term trend. And we have got the numbers. In fact, the past week, we got the quarterly numbers from a lot of PSU banks and private sector banks. And we find that private banks have done well. I mean, in the sense that ICICI Bank came out with very good numbers, Axis Bank came out with very good numbers. And yet we saw these Axis Bank shares fell. But PSU banks have done very well. पुनीत जी, हम आपका ध्यान कल और आज दोनों की तुलना करते हुए उन कंपनियों के साथ जो अच्छे खासे मुनाफे में रहे, कल कह लें कि इंडसइंड बैंक 2.9% लाभ में रहा था उस बड़ी गिरावट के बावजूद। L&T में 1.7% की बढ़त देखने को मिली थी। इसी तरह आज भी कुछ कंपनियां हैं जिनमें हम अच्छी खासी बढ़त कह लें कि देख रहे हैं। यहां समझने की बात यह है कि जिसे हम वैल्यू बाइंग कहते हैं, या कंपनियों का प्रदर्शन देख के एक जो चौतरफा बिकवाली या चौतरफा लिवाली का दौर चलता था, उसकी तुलना में क्या अभी का जो दौर दिख रहा, उसमें चुनिंदा यानी कहां हमें अधिक से अधिक मुनाफा के आसार दिख रहे हैं या कहां पैसा निकाल लेने में हमें फायदा होगा, उसे लेके तो नहीं कहीं निवेशक अपने धन का कह लें कि बिकवाली या लिवाली कर रहे हैं? मनोज जी, आपने बहुत अच्छे इसको ढंग से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं ये मानता हूं कि बाजार में हम चौतरफा बिकवाली या लिवाली नहीं देखेंगे, और अब जो इन्वेस्टर्स हैं जहां पर उन्हें लगता है वैल्यू यानी जहां पर कंपनीज का प्रदर्शन तो अच्छा है लेकिन जहां शेयर्स उतने बढ़े नहीं है, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था पीएसयू बैंक का, या आज आप देखें तो कुछ सीमेंट कंपनीज के शेयर्स में बहुत सी तेजी थी, या कुछ सिलेक्ट मेटल स्टॉक्स में तेजी थी। तो मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अब एक होशियारी से अपना पैसा उन कंपनियों में लगाना चाहते हैं जहां पर उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि भाई ये कंपनी सस्ते में मिल रही है,
बहुत ऊंचे दाम नहीं है, और जहां भी शेयर्स में बहुत ज्यादा तेजी आई है वहां वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद कुछ महीनों तक हम ये एक सिलेक्टिव बाइंग देखेंगे और सिलेक्टिव सेलिंग देखेंगे मार्केट्स में। Basic materials really picked up, but before we go into that, we'll take a short break. So please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We are with our stock market expert, Puneet Jain. Puneet, I was asking you about the basic materials index like Asian Paints, and then cement stocks like Ultratech Cements, which went up by as much as 4% in today's trade. Then we look at the other components that actually go into the building and construction industry, like metal stocks, which is your steel, Tata Steel being a favorite. So what is it about building and construction that we are seeing in India? The infrastructure growth story has been published quite often. But what is the volume of this economic activity are we seeing, which is really leading to the rise in the valuation of all these sectors combined and culminating in the real estate sector going up? So Arjun, if you look at the economic direction right now, you will find that inflation is on the rise. And I think that is here to stay for some time at least. And whenever we find inflationary pressures in the economy, the basic materials, things that go into making of other goods and services, those things obviously gain in prices. So going forward, it is reasonable to expect that prices for plastics and cement and steel, these prices will continue to rise, or they will be at least at pretty high levels. So clearly, these companies are going to make more profits, and therefore their stocks are to some extent going higher because of high inflationary expectations. Of course, certain sectors of economy, we find that a lot of emphasis has been raised by the government on infrastructure sector, and the government is not only making those plans, it is actually, you can see the implementation of those plans on the ground. And government is speeding up its own ability to raise resources by privatization of PSUs, etc., to implement these plans. So the consumption of these materials, again, like you said, cement, steel, wood, plastics, all these things, I think we're going to see robust demand for these goods, and therefore the prices and the demand is likely to be higher, and therefore the stock prices are higher. This is a typical pattern that we see whenever inflation heads higher, and I think again we are kind of repeating it. Markets are reflecting that expectation in the share prices. So we saw markets go down by 1,159 points yesterday. Today it's gone down by 678 points, and then volatility index has also come down by about 3% at the 17.43 level. So do you now see a direction downward rather than a resistance in the market today? And what does that mean for next week? So in short term, it's very difficult to predict because markets are volatile. But I think it is reasonable to expect that for the time being, we will see markets remain under selling pressure. There may be small bounce backs. But I don't see, like I said earlier, a very big rise in the market because there is lack of buying. I mean, FIs, I don't think are going to buy in a hurry. And domestic investments, which have been very aggressive lately, I think they're going to slow down a little bit. So, yes, we could say that we could see more down days than up days on the market, at least for a few coming weeks. पुनीत जी, यहाँ पर अहम सवाल ये बनता है कि जो बाजार का ये स्तर है, इसमें मान लें कोई नया निवेशकर्ता आना चाहे तो उसके लिए क्या उचित रहेगा कि इस स्तर पर वह आए और आने वाले साल भर का समय लेकर चलें कि एक वर्ष के लिए यदि वो लेके चलता है तो यहाँ से वह ऊपर की ओर जाएगा, सभी धारणाओं को देखते हुए, उपलब्ध स्थितियों को देखते हुए, और यदि हाँ तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं अगले एक वर्ष के, क्योंकि जो दुनिया भर में कोविड की दशा है और दिशा है उसमें इसका प्रसार होने के आसार अब बहुत कम दिख रहे हैं।
मनोज जी देखिए, नॉर्मली जब मार्केट्स हमें लगता है कि टॉप आउट हो रही हैं और हम कहें कि आप निवेश करना बंद कर दीजिए, तो शायद वो बहुत होशियारी की बात नहीं होगी, क्योंकि होता यह है कि जब मार्केट्स टर्न करती हैं तब हम उसको मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते तेजी को। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो निवेश कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। यदि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें आपको मार्केट्स की तेजी या मंदी को प्रेडिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप धीरे धीरे निवेश करते रहें। तो मुझे लगता है ये भी वो समय है जब निवेश को धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट्स में शार्प करेक्शन आती रहे। क्षेत्र को यदि लेके बात करें, सेक्टर्स को लेके बात करें, तो मैं ये कहूंगा कि जो बेसिक मटेरियल्स, यानी जैसे हमने भी बात करी, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है सामान, या जो हम देखते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर है, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहां पर हम अच्छी निवेश कर सकते हैं। साथ में मुझे लगता है कि जैसे हम फार्मा में और आईटी में कुछ करेक्शन रही है, या पीएसयू बैंक की हम बात करते हैं, वहां पे बहुत अच्छी वैल्यू है, और एफएमसीजी कंपनीज के शेयर, इनफैक्ट अगर हम 1.5 साल को देखें तो एफएमसीजी कंपनीज के शेयर उतने नहीं बढ़े। तो निवेशक अभी भी बहुत ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छी वैल्यू अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा वो रिसर्च करके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, एकदम सारा पैसा न लगाएं, slowly, systematic ढंग से इन्वेस्टमेंट करें। Puneet, stocks like Reliance Industries, or if you look at a sector like IT, they have a certain weightage on the Sensex and Nifty. So when the valuation comes down because of profit booking or a sell-off, the market comes down, the index comes down, and they have been, this is the cash market. So when you look at the derivatives market, the F&O expiry which happened on Thursday, new positions are now being taken for the month and the week concern. Is that any indication as to how the FIIs and DIIs would behave in terms of buying and selling in the coming week or the coming month, because they are also heavily hedged into derivatives? So Arjun, when we look at data from derivatives market yesterday, because yesterday the October series ended and there was rollover of positions to November series, we saw that the percentage of rollover was less than what had been happening in the past. So clearly it was obvious that the bulls or the buyers were not willing to carry forward their positions to the next month, which itself indicated that the weakness will continue into this market. But again, like I said, these are short-term trends. Very difficult to predict what will happen tomorrow, because next week, please remember that we are going to have a very, very important meeting of the US Federal Reserve. Now, that is going to be kind of a determinant of what is the kind of liquidity which will remain in the markets, because they have said that in the month of November, they might consider some kind of a tapering to their QE. So, the US Federal Reserve, how that meeting pans out next week, I think will determine the market's short-term trend. Longer term, I'm very bullish. I believe Indian economy will continue to do well. But yes, for the next few months, we could see significant pullback. And I would advise everybody to really watch out for that US Fed meeting next week, because that is where the real short-term cues for the market will come from. And especially the amount that is going towards buying assets. So tapering is a very important indicator of how the FIIs would buy into our market. But more importantly, right now, if you look at the fundamentals of companies, how would you rate the third quarter earnings reports of different sectors in terms of investor interest? So, Arjun, third quarter earnings reports, or rather the so-called second quarter financial earnings reports, which is quarter ending in September, I think they have been very good for Indian companies. And in US, of course, there have been some disappointments from Apple and from Amazon. But in India, most IT companies, banks, steel companies, I think across the board, I mean, practically all companies have reported very good numbers, and they continue to show that the earnings rebound is very strong in India. In fact, India is likely to be the fastest growing major economy next year, and with a GDP growth of more than 7.5%. So I think we will continue to see strong earnings from companies. However, we must remember that markets sometimes run ahead of the fundamentals. So they went up so fast, and the stock prices went up so much, that it is only logical that some kind of pullback will happen because of profit booking. But fundamentals, like I said, I can go on and on, but broadly speaking, fundamentals of the Indian economy are very good. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% लाभ में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% घाटे में रहा। हांगकांग का हैंग 0.7% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां गिरावट का रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.3% नीचे चल रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.8% नीचे कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. stock market, the Nasdaq hit a record high yesterday, led by gains in index heavyweights including Apple and Amazon. The major U.S. equity indices gained amid good corporate quarterly earnings reports. Dow Jones Industrial Average ended 0.7% up, S&P 500 climbed 1%, and the Nasdaq Composite Index jumped 1.4%. And before we continue a discussion with our expert Puneet Jain, we'll take a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra, and to continue a discussion on the foreign stock markets, US and the Asian stock markets. Apple and Amazon have declared the results. We have seen also that there were gains in the valuation of these stocks. In the US market, Puneet, we are seeing that the ESG, environment and social governance, is a very important factor to be considered, especially by those who are into consumer spending. And now you also have Facebook, which has changed its name to Meta. So what is the principles, what is really driving corporate performance in the US right now? So the U.S. markets are extremely, first of all, they've really shot up, and liquidity for companies has gone up. And we've seen most of the companies, in fact, there was a story yesterday which said that Tesla's market cap is probably more than that of Pakistan's GDP. So you can have one company whose market cap is more than the GDP of a country. So that is the situation in US. The ESG funds that you talk about, they look for companies which come good on all these three parameters. I don't know. I mean, I can't define what fulfills these parameters, but right now there's a lot of money available there. However, in US again, we see a lot of profit booking happening at the current levels, although the liquidity is still strong. But next week, like I said, US Fed Reserve meeting will really determine how much liquidity will be there. But it is no brainer to say that sooner or later we're going to see liquidity being drained out of the system in US. And therefore, I'm so slightly, I would say, cautious about equities in USA and everywhere in the world. पुनीत जी, हम आपका ध्यान मेटा की ओर ले चलना चाहेंगे। जिस हिसाब से कह लें कि जो खबरें आ रही हैं उसमें मेटावर्स को लेकर क्या तकनीकी जगत में कोई एक व्यापक बदलाव की परिकल्पना पर काम चल रहा है जिससे बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जैसा कि हमने इंटरनेट की बात देखा, या क्या कुछ हो रहा है इस क्षेत्र में? संक्षेप में देखिए, मेटावर्स एक आइडिया है, जैसे यूनिवर्स, यानी एक सिंगल हम कहते हैं यूनिफाइड पूरा दुनिया है। मेटावर्स ये कहता है कि भाई इसके कई पहलू हैं और एक आइडिया है। मैं ये कहूंगा कोई तकनीकी इमीडिएटली कोई फर्क नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ एक देखने का नजरिया है और देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इट मीन्स। क्योंकि फेसबुक को काफी इसके नाम को लेकर काफी परेशानियां थी कंपनी को, तो उन्होंने कंपनी चेंज कर दिया। कोई कंपनी चेंज नहीं हो रही है ओवरनाइट, इट इज जस्ट एन आइडिया राइट नाउ। Well, let's have a look at the oil market now. Oil rose further above $84 a barrel on expectations that OPEC and its allies will keep supply tight, countering rising U.S. inventories and the prospect of more Iranian exports.
In intraday trade, Brent crude was trading around $84.30 per barrel, while WTI crude prices were at $82.20 per barrel. Puneet, do tell us about the U.S. Consumption of petroleum products, especially with the onset of winters, and how do you see Iranian supplies bring down prices if that is possible? So Iran, of course, is a very important supplier of oil, which was taken off the market by U.S. sanctions. It was, in fact, the second largest exporter of oil after Saudi Arabia, and they're practically not a player in the markets right now. So if they return to the oil markets, it will be good to bring down prices. I think, again, like I said earlier, oil prices have really hit the peak in the short term. I don't see prices going much higher because markets can't support higher prices. They're already causing a lot of inflation. So my sense is that we have seen the peak of the market, of oil market behind us. And going forward, I think the prices could remain soft. We have seen that happen even with some of the commodities again, like gold is kind of softening a little bit. So I think oil will also remain on the soft side. So what's the price at which India is importing crude oil and the impact on its fiscal deficit? See, right now, of course, it's a huge pressure on inflationary pressure. Like we know, retail prices of oil have gone up. I think around $60 a barrel is where India would be comfortable economically. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 220 रुपए घटकर 47,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 470 रुपए फिसलकर 64,460 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। वहीं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने में थोड़ी सी कमजोरी देखी गई और ये $1,795.50 प्रति औंस पर आ गया। वहीं चांदी में थोड़ी मजबूती थी, ये $24 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। पुनीत जी, सोने और चांदी के आसार क्या हैं त्योहारों के अवसर पर, और यदि निवेश की दृष्टि से देखें तो आगे आने वाले दिनों में सोना किस दिशा में जाता दिख रहा? मनोज जी, देखिए, सोना अभी फिलहाल ये $1,800 पर आउंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी गिरावट है सोने में, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड में हम तेजी बरकरार रहेगी। मेरा अपना भी मानना यह है कि आने वाला एक वर्ष जिस दौरान ये इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, गोल्ड में तेजी आ सकती है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी, पर मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में मजबूती रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट है, बट आई थिंक वन कैन रिमेन बुलिश ऑन गोल्ड एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 year. Puneet, very briefly, the prices we mentioned for the domestic gold and silver is futures. So how do you see the prices coming down? Very briefly. I don't see, because these prices are really determined by global prices. So I think these prices will follow what is the trend on overseas market. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। Before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed losses of more than 1%. Sensex declines to trade near 59,300. Nifty slips below 17,700. Rupee appreciates by 4 paise against the US dollar. And Brent crude rises above $84 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.